consolidation of power at what used to be federal but now is provincial and doesn't really seem to be going to the local level? And what are some of the structural, legal, or fiscal barriers standing in the way? जी थैंक यू सो मच पहले तो आई रियली लाइक टू थैंक मिफ्ता साहब कि उन्होंने बहुत सारी बातें वो कही विच आई वाज प्लानिंग टू से एंड आई एम ग्लैड इट इज तो यू नो इफ यू रियली लुक एट devolution which is supposed to be a kind of a starting a new history in Pakistan उसका जो structure है और premise है वही बड़ा problematic है because it is based on the population. The award, the financial award is based on the population. And I feel that, when devolution happened, and of course, Punjab being the most populous is receiving the highest funds and Balochistan the least. And since I work for women's health, and I'll bring women again and again because the children have been highlighted by Mifta Sahab very much, and rightly so, that, I work for women health issues and I care for that. Dr. Izdai, sorry, just 1 second. May I ask the audience to kindly keep conversation to a minimal? There's so much noise in the hallway that we're having a little bit of trouble understanding what the panelists might be saying. If you need to have a conversation, you need to be on a phone, kindly step outside of the hall. But if you're in the hall, kindly keep the conversation to a minimal. Apologies, ma'am, please. So, after the devolution, when I went to the Balochistan and spoke to Secretary about the family planning program and reaching out to the women who has very high unmet need for birth spacing, his remark was, why should we reduce the population because we don't get the money? And, it is based on the fact. And I said, sir, you're absolutely right. But do you know that Balochistan has the highest maternal mortality ratio? So many women die, 780 or something, which is one of the worst in the region, not in the region, in the world. And I said, would you let your woman die during pregnancy and will not be given her the empowerment and the tool so she can manage her reproductive health better? And he got that. So what I'm trying to say, that this population-based determination of the funds is very problematic. And we have been, our latest ask, we had this huge population council in the Supreme Court Judicial Academy, where all the Chief Justices were sitting. And we said the same thing, so the reform that should happen is to really look at NFC award criteria and change it. We know India has frozen the population a decade ago because they were facing the same issue. And it's now performance-based. So they don't use population as a baseline for giving funds because they know it's a disincentive, and India was a huge population. They knew they have to have that kind of a boundaries. So they did that. So I think first thing is to really look at that criteria and start working on it. Second, absolutely I agree. The devolution has happened from federal to provinces. It hasn't gone down until and unless we don't empower local bodies, because we have seen in early 2000, whatever number, and especially the fact that so many women were able to be part of the local government. They know the issues, they know what is happening, and they know the solutions also. We always think, gee, jaise main doctor hu, public health specialist hu, that we are the we know everything. No, the communities, the local indigenous people has the most important information to share and the solutions to tell you. And we don't do that. We make policies in the closed rooms, in the very air-conditioned environment. So I think that until the devolution happens at that level, we will not be seeing the change that we want to see. So the local bodies has to be empowered. They have to be given complete autonomy, and they should be bringing in the structure. And then gender and equity has to be completely the kind of it's like non-negotiable. So you have to have women representation, you have to have that leadership voices, which is reflective of what community wants, what women wants, and then of course equity, because Mifta Saab was absolutely right, that if we look at Pakistan, even those indicators which are better, you start unpacking them and you'll see they're worst in the rural areas compared to the urban areas, but average hides inequity. So I always say that average hides inequity. So we have to really, really make sure it's going to the last mile, the benefit that it is intended to. So these and then of course looking at strategic purchasing, looking at, the new health financing models, and looking,
distribution of the funds according to the disease burden, according to the poverty ranking. What is needed, not as a kind of a fixed formula that is done. So you have to be very smart strategies. You have to be a smart planner, and then you have to measure the result. It has to be performance-based. Great point. Of course, if you're delivering results, you'll get these finances. If you're not delivering result, it cannot be done. So I think governance and accountability has to be a very strong parameter. It's a great point. And I do agree. I mean, the 18th Amendment happened in April of 2010, which is almost more than 15 years ago now. And that was also supported in part by the 7th NFC, for the financial devolution. And sure, back then population was used as a baseline metric, but perhaps 15 years into it, there is now a need and frankly an opportunity for us to be able to look at other metrics. I remember maybe 8 or 7 or 8 or maybe 10 years ago, an education campaign in the country called Alif Elan did these district rankings in education. And those district rankings created this internal competition between those districts. And therefore, some markers within the education space ended up going up. The point here being, if you just use population as a baseline, with the growth rate that we have, the inequity between the provinces is never really going to go away. But if you make district rankings or tehsil rankings or UC rankings, whichever metric, devolved metric you want to use, perhaps that is a better way to compete for some of these resources. And in that sense, I completely agree with Miftah Bhai in the comments that he made. Fawzia, would you like to step in at this point? आपने जो सवाल पूछा था पहले उर्दू में बताएं, मुझे इतनी अंग्रेजी समझ नहीं आती, तो मुझे सवाल भी समझ नहीं आया. मैंने पोडियम पे खड़े हुए कह दिया था कि अगर मैंने इनसे अंग्रेजी में सवाल पूछा तो मुझे जूतियां पड़ेंगी. तो सवाल जो है वो ये है कि डिवॉल्व करने के लिए जो आपके फाइनेंशियल, लीगल और स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनको ओवरकम करना है प्रोविंसेस से अगली गवर्नमेंट लेयर, लोकल गवर्नमेंट में जाने के लिए, उनमें से वो कौन सी चीजें हैं जिन पर हम फौरी तौर पे काम कर सकते हैं और किन चीजों एक टर्म डेवलपमेंट सेक्टर में यूज की जाती है लो हैंगिंग फ्रूट, जैसे आई एम श्योर सबको नफरत है, बट वो कौन सी चीजें जो हम पहले कर सकते हैं ताकि उसकी तरफ हम गामजन हो. बड़ी मेहरबानी, आपने उर्दू में बताया. गामजन का लफ्ज मैंने खुद सुना, आप सोच रही हैं पता नहीं गामजन की है. पहले तो मैं आपकी तवज्जो इस टॉपिक की तरफ दिलाना चाहती हूँ. डेवोल्यूशन क्या लिखा था? कैटलिस्ट फॉर सेक्टर डेवलपमेंट. भाईजान, डेवोल्यूशन सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए तो हुई नहीं थी. अगर हम 2010 की बात कर रहे हैं तो वो डेवोल्यूशन तो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाह रही थी, 58(2)B को ख़त्म करना चाह रही थी, और जो ग्रीवियंसेस 1973 के आइन के तनाजुर में हमारे पास मौजूद थे, कंकरेंट और लेजिस्लेटिव लिस्ट वाले, उस कट्टे को सॉर्ट करने के लिए हम करना चाह रहे थे. तो हमने कहा ये करना ज़रूरी है और इसे हम करें, और हमने डिवॉल्व कर दी. आर्ग्यूमेंट ये था कि सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन से डिवॉल्व होंगे. लोकल गवर्नमेंट जब 2010 में, उससे पहले थी, मुशर्रफ दौर में आखिरी जो हमने देखा, जैसे ही 18th अमेंडमेंट हुई जिसका नाम डिवोल्यूशन के तौर पे लिया जा रहा है, तो सबसे पहले काम जो बंद किया वो लोकल गवर्नमेंट बंद हो गई. 2010 के बाद नहीं थी. उसके बाद अब आके जो छोटी मोटी जगह जगह चल रही है वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए, और मैं बहुत केयरफुली यूज़ करी हूँ क्योंकि मैं खुद एक एक्स ब्यूरोक्रेट हूँ, वो उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको पावर और सेंट्रलाइज करने के लिए. तो सेंट्रलाइजेशन हमने नेशनल लेवल से नीचे आके कर दी. अब जो आप बात करें कि क्या हमारे, जो मिफ्ता ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमारे गवर्नेंस डेफिसिट क्या है, और उनकी पूरी बात का मुझे एक बात समझ आ गई, भाईजान ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना करने वालियाँ गल्लां ने. जितने हमारे गवर्नेंस के प्रॉब्लम है इसका कुछ नहीं होगा. हर कोई एक आगे दूसरे को जा रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मिफ्ता के लिए. मगर हमने क्या हम कर सकते थे नहीं की. सूबों की बात की, हमें सूबों की नहीं, हमें इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है. लोकल गवर्नमेंट के भी तो रेवेन्यू सिस्टम थे, जो 2002 वाला भी, मुशर्रफ के दौर वाला, जो आखिरी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की जब अगर हम बात करें तो उसमें ये चीज़ मौजूद थी. आपके पास रेवेन्यू कलेक्शन का मॉडल था उसमें, मगर उसमें अकाउंटेबिलिटी का भी मॉडल था. और उस अकाउंटेबिलिटी की बात ये थी, जो सबसे पहले उस चीज़ में कटी वो ये थी कि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की ACR जो है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम लिखेगा. सबसे पहला लड़ाई हमारी उसके ऊपर हुई, ख़त्म हो गया.
تو ہر کوئی بھی ایک نئی چیز یا ایک میکنزم گورننس میکنزم چلانے کے لیے اس کی انسٹیٹیوشنلائزیشن بہت ضروری ہے. ہم پہلے ہٹی انسٹیٹیوشنلائزیشن پہ کرتے ہیں اور پھر بعد کی بات کرتے ہیں. پہلے ہم کہتے ہیں بس یہ ایک ادارہ ہے جو ابھی تک ادارے کے طور پہ کھڑا ہے. کیونکہ مجھے کالے ڈالے سے ڈر لگتا ہے تو اس لیے میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گی, مگر اس کی بات ہم نے نہیں کرنی. ہم سیاستدان کو گالی دیں گے, ہم مفتاح کہیں نظر آ جائیں گے تو ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں گے, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ کی پارٹی یہ نہیں کر رہی, مگر جو یہ کام اچھا کر رہے ہوں گے ہم اس کی بات نہیں کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ تھوڑا سا آگے آتے ہیں. آئی تھنک آئی ول اگری ود مفتاح کہ ہمارا روٹ کاز جو ہے وہ پاپولیشن کا ہے. تعلیم, صحت, ڈاکٹر صاحبہ نے بہت زبردست باتیں کی, یہ ساری ہماری پاپولیشن سے جڑی ہیں. ابھی تک آپ پاپولیشن جو ہے کنٹرول کا لفظ اب استعمال نہیں کرتے, اب آپ بات کرتے ہیں توازن کی. کیونکہ اگر ہم کنٹرول یا پلاننگ کی بات کریں تو کچھ لوگوں کے دل کو دھچکا لگتا ہے, اور ہم جس طرح سینیٹری نیپکن کو لفافے میں بند کر کے براؤن میں دیتے ہیں, اسی طرح ہم نے پاپولیشن پلاننگ کو بھی ایک براؤن لفافے میں بند کر دیا ہے. ثاقب نثار تو اس پر بات کر سکتے ہیں, میں اور آپ نہیں کر سکتے.